Welcome back. Today I'm going to summarize the next chapter, citizenship. अब ये जो citizenship है ना, this is actually a long debated topic, and there have been many changes in the rules, regulations across the world. Because citizenship जो है, it is not restricting to India. It is all about citizenship किसको कहते हैं. And if we are born in a country, हम कहते हैं या आई एम एन इंडियन बिकॉज आई एम born in India. बट अगर मुझे और किसी कंट्री का सिटीजनशिप लेना हो देन, या कोई और हमारे देश का लेना चाहता है देन, एंड देन what are the rights, what are the duties we have if we have taken the citizenship of a country, global या universal, what is the difference? These are all the topics that we cover under this chapter. Today I'm going to take it only with the notes. Then we would do it along with NCERT. Now, citizenship का मतलब हो जाता है when you are living in a state. State means any country. किसी भी country में आप जहाँ रहते हो, वहां पर आपका जो status है as a member of that country, as a recognized member of that country, that is citizenship. Yani you have certain political, legal, social rights, and there might be no discrimination when it comes to any right or anything else. Means आप उस community के, political community के, you are full and equal members. You are able to participate and you are also getting certain privileges. So that is the concept of citizenship. Citizenship एक बहुत ही long battled question है, which has been there from the period of Aristotle, Socrates. मतलब उन लोगों ने हमेशा ही इस बात को रखा था that there should be a concept that a person who is belonging to one particular nation state should be recognized. Recognize का मतलब हो जाता है उसे प्रोटेक्शन भी मिल रही है, उसको certain benefits भी मिल रही है. That means उसको हम बोल रहे हैं full membership. यानी the person is enjoying certain political, certain civil rights, certain कुछ protection because he is loyal to that country, loyal to that state. He is abiding to the rules and regulations of that country, that society. He is not only following but also abiding. जहां उसको जरूरत है वो आगे आकर प्रोटेक्ट भी कर रहा है. फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आप लोगों को याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान the first thing what the French people had done was a collective belonging, nation state, a single language, a collective identity. इसी चीज को उन लोगों ने जो है आगे बढ़ाया था, जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप. यानी नेशन स्टेट्स प्रोवाइड अ कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू देयर मेंबर्स एज वेल एज देयर राइट्स. Therefore, we think of ourselves as Indians, Chinese, Japanese, German, depending on the state to which we belong. Citizens expect certain rights from their state. Now, long back, as I said, that if you see under monarchy, we were only subjects. We were not citizens. Subjects का मतलब हो जाता है anything on which a ruler is able to make law, not anything for which the ruler is making law. It is anything on which a ruler is making law. But when it comes to citizens, it is something where you have some laws. Citizens expect certain rights from their state as well as help, protection wherever, whenever they are traveling.
certain rights so that they are able to live their lives, जिसको हम लोग जो है rights वाले में पढ़ चुके हैं, right to equality, right to freedom, right to speech, where they are able to live with dignity, can progress and develop in their respective area of interest. A citizen also requires protection towards right to life, which we have already done in both the books under Constitution at Work and last chapter also. A state is also required to protect for protection towards threats, यानी कि कोई भी external threat है, violence है, anything, it is the duty of the government to provide the protection. But now what is the difference between a citizen and a refugee? रेफ्यूजी वो होता है जो दूसरी कंट्री के अंदर द पर्सन टेक्स शेल्टर. पीछे अभी रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए, देन इन असम ऑल्सो देयर वर लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट, और अभी भी असम गण परिषद जो बना था, वहां का जो पॉलिटिकल वो है, वो भी जो है it was made on this pretext only because they were protesting against the illegal entry of refugees into their state. तो refuge जो है it has been a very big issue. तो refugees जो होते हैं they may get shelter, they may get ration card also. आपके 12th में एक चैप्टर है इंग्लिश के अंदर, यू विल रीड, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको अंदाजा होता है. They may get the ration card, they may get, in India we get the ration card, they may get certain benefits, like they may be, but they do not enjoy any rights and live like strangers in another country. मतलब they are only refuge. राशन कार्ड है, जाओ राशन ले सकते हो, लेकिन उनको और कुछ नहीं मिलता है. दे आर नॉट गिवन द सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप नहीं है तो उनको वो कोई भी, अगर उन्हें कोई मारता है, पीटता है, उनके साथ कुछ गलत होता है, दे आर नॉट एबल टू टेक दो स्टेप्स विच अ सिटीजन कैन टेक. Such people are not guaranteed rights by any state and generally live in a precarious conditions. For this, as I said, the next year in English you will be having a chapter, and in Delhi, मतलब refugees you will find everywhere, like in Kolkata का जो आपका area है, then Assam में तो इस बात को काफी they have been taking very seriously. Then in Delhi we have the place called Simapuri. That particular Simapuri is actually the place of refuge, and the condition in which they live itself tells a story. हमें उस चीज के लिए हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है. When you go even across that area, आप उस एरिया से भी जाते हो, तो you find that what is the condition they are living. You cannot call any development. You cannot, even though they are there living for years, but they do not have the rights which we have. Now, what is equal membership under citizenship? मतलब citizenship का मतलब है आप उस country के member हो. जैसे हमारी family में हम member हैं, आप 4 जने हो, आप हो, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके मम्मी पापा हैं, then you all become automatically the member. जो सब कुछ करते हैं वो आप भी करते हो, जो सब खाते हैं वो आप भी खाते हो. That's a family. Similarly, when we call it as a citizenship, the term equal membership refers that citizens have the same rights. Yani in our country, according to the constitution, each one of us has been given the same rights, whether you belong to the category of any upper caste or lower caste, any gender, any region, or you are rich or poor. Everyone is treated equally as per law. When we talk about citizenship, we are talking about rights and responsibilities, which we have won after many battles. Like in India, we know the freedom struggle. In South Africa, the black people. Why the black people were against the white in South Africa? Apartheid. It was only because wahan par they were not given
all those rights which whites enjoyed. In fact, उनके privileges हटा दिए गए थे. एंजॉय करने हो तो छोड़ दो, उनके प्रिविलेजेस हटा दिए गए थे. यानी कि दे वर नॉट कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ देयर ओन कंट्री इन विच दे वर बॉर्न. Citizenship encompasses not only state citizen relation but also citizens and their responsibilities to the state. Last class में हम पढ़ चुके हैं, and even in the other chapters also, the rights that we have as a citizen of any country. यानी अपने देश की रक्षा करना, अपने देश की चीजों की रक्षा करना, अपनी मातृभाषा की रक्षा करना, अपने कल्चर की रक्षा करना, giving respect to the national flag, respect to the national monuments, everything is our responsibility. Citizen, not only it encompasses not only state imposed legal obligations but also a moral obligation to participate in and contribute to the community's shared life. Last में rights में हमने पढ़ा था कि rights जो हैं they are not something which is legal. राइट्स हमारे वो नहीं है जो लीगल है, राइट्स हमारे वो है जो लीगल के साथ मॉरली भी मतलब कि हम लोगों को सेटिस्फाई करते हैं. सिर्फ कोई चीज लॉ ने बना दिया है इसीलिए वो हमारे लिए राइट नहीं बन जाता है. इट बिकम्स राइट ओनली व्हेन वी इट इज मेड एज पर द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो citizens are regarded as the inheritors and trustees of the country's culture and natural resource. जो अभी आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि आपको अपनी कंट्री की देखभाल करनी है, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करनी है, अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, अपने नेशनल हेरिटेज की रिस्पेक्ट करनी है. यानी कि these are the terms which are associated with citizenship. So now what are the rights we have? We have already studied in the last many chapters. Rights का मतलब political, social, economical. There are three kinds of main rights and right to life. हमारे पास ये minimum कुछ rights हैं जो citizens को दिया जाता है. And the rights given to the citizens depend from one country to another. In our country we have certain rights, in other countries certain rights are there which may not be there in our constitution. The exact nature of citizens rights varies by state. जो मैंने अभी आपको बताया कि हम मतलब सबके पास एक राइट तो है कि राइट टू वोट, लेकिन जो अदर राइट्स है that depends from one country to another, like in South Africa right to privacy is there, right to basic मतलब कि आपके जो हाउसिंग है वो है, लेकिन इन इंडिया इट इज नॉट देयर. वी डोंट हैव these two rights. हाँ, द गवर्नमेंट ट्राइज इट अंडर द सोशल वेलफेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर करते हैं, लेकिन इट इज नॉट देयर एज अ राइट. इन अदर कंट्रीज जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको मतलब कम्बैट करने के लिए the countries have certain other schemes. In our country there are certain other schemes. So this is how the rights may differ from one country to another. Today the exact nature of citizens varies by state, but in most democratic countries they would include political rights such as right to vote, civil rights such as freedom of speech, belief, socio-economic right that is minimum wage or education. The right to equality of rights and status is one of the fundamental rights of citizenship जो सभी में हमेशा रहता है. और अगर आप देखोगे तो किसी भी what you call as democratic country, political right का उनका पहला जो main होता है वो होता है universal adult franchise. In some areas it is adult franchise, in some areas it is universal. यूनिवर्सल वर्ड से ये हो जाता है कि एनी वन, एंड अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हो जाता है देयर आर सर्टेन क्लॉज. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि जब माइग्रेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, सी देयर आर टू काइंड्स. वन इज आप दूसरी कंट्री से यहाँ शेल्टर लेकर आ रहे, दूसरा आप एमिग्रेट करके यहाँ पर आ रहे हो. लाइक मेनी ऑफ इंडियंस गो टू कैनेडा, यूएस. कैनेडा इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट easiest way, but अभी पीछे
because of the Indian because of the problems they have tightened. And पीछे ऐसा था 2020 के अंदर, I remember 2020, there was a scheme in Canada, and that scheme was for some 6 months or something, that if we are applying for the PR, not citizenship, PR, that is permanent residency, then they would be providing us with certain. लेकिन अगर आप वहां पर जाकर जो पीआर है और एक जो सिटीजन है, उनके चीजों में अगर आप डिफर करोगे, उनसे आप बात करोगे, तो यू वुड नो हाउ मच वी आर लैगिंग, मीन्स वहीं पे रहने वाले. Like many of my cousins are living in US and they are all permanent citizens of that country. कैसे मिला वो अभी हम पढ़ेंगे, I'll tell you. And but what they say is कि if you are a matlab you are permanent resident, you may get certain benefits, but education, health, which is very costly in US, वो चीजें जो है हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. Whereas if it is a permanent, मतलब कि if you are a citizen, then all those benefits you are also getting. तो जो migrants होते हैं नॉर्मली, उनको कई चीजें नहीं मिलती है. एंड मोर ओवर जो लोकल्स होते हैं, जो वहीं के लोग होते हैं, दे ऑल्सो बिकम रिसेंटफुल. फॉर एग्जाम्पल, इन यूएस देर वॉज अ वेरी बिग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडियंस. रीजन कि इंडियंस के जो दिमाग होता है वो काफी तेज होता है, एंड मोस्ट ऑफ द सिलिकॉन वैली पीपल आर फ्रॉम इंडिया. So there was one particular time, I think it was during the presidential election of Trump or something, when they all demanded that जो Indians है they should be taken out, या फिर जो माइग्रेशन की जो प्रोसीजर्स है उनको आप थोड़ा टाइट करो. बिकॉज उनको लगता था कि उनकी जो जॉब्स हैं दे आर बीइंग गिवन टू आउटसाइडर्स. उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए वो आउटसाइडर्स को मिल रही है. Locals become resentful of jobs and opportunities being given to people from outside the area, sometimes at lower wages as a result of worker migration. This is what I told. A person actually from US, उसका जो पे होता है, and a person migrated from any other country, उसका जो पे होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. So there was a protest. There may be a demand to limit certain jobs to state residents or those who speak the local language. The issue could be taken up by political parties. And if you see the uh, procedure of entering, you might have seen, if you want to go to countries like Canada, US, or any Western, you need to go for TOEFL. No, you have to go for IELTS. And then there are certain countries which are accepting TOEFL. And there are certain levels. If you're going as a student, the level is something different. If you're going as a migrant, then there is some difference. और इन सब के लिए काफी उन लोगों ने जो है अपना वो टाइप बना रखा. इन कनाडा जो प्रोविंसेस हैं आपके, दे आर बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस दे स्पीक. मतलब वहां पर क्या है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन इंग्लिश ओरिएंटेड है, एंड एक पर्टिकुलर पोर्शन आपका पूरा फ्रेंच ओरिएंटेड है. मतलब और दीवार की भी आपको जो है डिफरेंस नहीं है. अगर आपको लगता है कि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस कि यहां से वहां पर, तो नो, बिल्कुल भी नहीं. ये रोड क्रॉस करके सामने वाली बिल्डिंग आपकी फ्रेंच प्रेमिसेस में है, ये वाली आपकी जो है आपका इस वाले में है. तो अगर आप उसको देखते हो तो वहां पर क्या है कि इफ यू हैव अप्लाइड फॉर अ पीआर से देयर, so then what happens is they would ask you to go for certain formalities. Like if you are into the English province, then you need to clear IELTS with a certain score. And if you are entering into French, तो उनका जो है ना फ्रेंच का जो क्राइटेरिया है ना, that's very 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 difficult. The same is with Germany. अगर आपको जर्मनी के अंदर जाना है तो आपको जर्मनी का ए लेवल क्लियर करना पड़ता है, जिसको नॉर्मली हम लोगों को 8 साल लग जाते हैं टू क्लियर. that's the way, तो जो
ये जो एक मतलब कि why this is, मतलब this is where we all tell about citizenship. अभी recently it was my own family only. Let me tell you, मतलब in reality कोई फेंकने वाली चीज नहीं है. My 99% family is living abroad. So they tell me what is the procedure. Some of them went very, बहुत पहले चले गए थे, कुछ अभी recently गए. So one of the person had applied in Canada only and they told me this thing. तो why this is done, ऐसा रूल क्यों बनाते हैं? द रीजन इज कि जब हम लोग वहां जाएंगे तो नेचुरल कि वहां का जो लोकल होता है उसका जॉब चला जाता है. द सेम इज विद अस ऑल्सो. अगर बाहर का आदमी आकर यहाँ 100 रुपए में काम कर रहा है और अगर हम 200 रुपए मांग रहे हैं तो व्हाट विल हैपन? Why there are so many migrants in Delhi as compared to any other states? Why बिहार से सारे के सारे लोग दिल्ली या बॉम्बे आते हैं? Why? Delhi is never a state which is having its original, what you call as people. It is completely from across India. I'm also. तो ऐसा क्यों है? This is where the question comes. The organized violence against outsiders could be part of resistance. This is what happened in Assam. This happened in Assam. There were organized violence. They did not want people to come over and take that. Such, क्योंकि असम एक ऐसा एरिया है, I haven't seen but I have heard through people who have visited over, कि असम का एक पर्टिकुलर बॉर्डर जो है वो एंड वेस्ट बंगाल का बॉर्डर आपका इतना मतलब कि कॉमन है कि इंसान मतलब कि आराम से जाता है. जैसे आप अगर नेपाल एंड इंडिया का बॉर्डर देखो, इफ यू आर विजिटेड नेपाल एंड इंडिया का बॉर्डर, बांग्लादेश एंड इंडिया का बॉर्डर, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग. मतलब कि पीपल एंड इवन कनाडा एंड यूएस, अभी रिसेंटली एन इंडियन फैमिली विथ 8 people died because they were trying to cross that line. So it's very common. तो कई बार इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, कई बार लीगली स्टेट्स उनको अलाउ करती है कि आकर हमारे यहाँ रहो. इन इंडिया ड्यूरिंग 1970s वॉर, जो हमारे उस वक्त में देन प्राइम मिनिस्टर थी, शी हैड अलाउड मेनी ऑफ द पीपल टू टेक शेल्टर इन इंडिया एज रेफ्यूजी. रेफ्यूजी होते हैं जो शेल्टर लेते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं जो प्रॉपर तरीके से माइग्रेट होकर हमारी कंट्री में आते हैं. दैट्स द डिफरेंस. There may be distinction between how we respond to poor migrants and how we respond to skilled migrants at times. Like in, as I said, in US, there is a dearth of skilled matlab ki people. So they want people from South Asian countries to come there. We may not always be as welcoming the poor migrants who move into communities as we are to highly skilled and wealthy workers. इसीलिए if you look into the criteria of citizenship, this happens. Now, what is equal rights? What is equal rights? Already done in rights chapter. Means it should be provided, not in everyone in India receives it. जैसे अभी आपको मैंने बताया that there are many migrants who have migrated from poor parts of countries such as Bihar, Uttar Pradesh and settle in cities. They leave their villages and settle in urban areas such as Delhi and Mumbai. Mumbai में तो there was a mass protest by the politicians, in fact, not by the localists but by the even by the protest. मतलब कि उन लोगों ने तो ना वहाँ पे most of them are taxi drivers or the auto drivers and there was a drive कि इन लोगों को भगाओ यहाँ से. There was a literally there was a long battle and then there was a question, मतलब asking about all the celebrities. उन्होंने कहा तुम लोगों को जितने भी ये celebrities हैं जिनको आप लोग बोलते हो कि हमारे यहाँ रहते हैं, tell one of them who is from your Maharashtra, leaving some people, most of them are also migrants. तो ये जो एक बैटल है ना अबाउट रिच पुअर, ये हमेशा चलता ही रहता है. The poor were asked to leave. They were said कि non-Maharashtrian should not live in Maharashtra. Now the question came कि if non-Maharashtrian अगर आप कह रहे हो, तो what about the celebrities? What about the sports stars?
How many of them are actually from, even some of them are not from even India, they are from Peshawar and Lahore. अब मतलब कि वो लोग 47 से पहले उस एरिया के थे. These poor migrants do not receive basic housing and live in slums in one small room with no. In Mumbai, it is called as Dharavi, the largest slum in Asia. In Delhi, as I said, it is Simapuri. But they also play an important role by cleaning our home, cleaning our cars, etc. Then normally they don't have anything, but they work as a result. If these poor people are Indians, they do not have access to bare essentials of life. Next is the tribals. क्योंकि ट्राइबल्स क्यों हमारे यहाँ पर बुरा माना जाता है, क्योंकि ये लोग वो थे जो पहले आपके फॉरेस्ट में रहते थे. दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ट्राइब, और आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनको एसटी के अंडर रिकॉग्नाइज करता है. और फॉरेस्ट एक्ट जब लगा था हमारे यहाँ पर, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, so many of them were rendered homeless and they were taken out from their places. उनको मना कर दिया गया था. They were not supposed to enter into the forest. They were not supposed to use the forest products. The forests are being cut down by rich people for their commercial interest. They build hotels, playground, beautiful locales, but destroy the tribal people's area of traditional place. The same is with the women. They have equal rights, but they are discriminated. They are attacked at night and many crimes are committed, and in fact movies like Animals जो है उसको glorify भी करते हैं. I haven't watched, but I have seen many of the reviews. My daughter told me that not to, you will not even sit for 10 minutes. I don't like vulgarity and मैं बहुत इन चीजों पता नहीं क्यों, I don't like vulgarities and all that. Abuse वगैरह मुझे नहीं पसंद है. But I heard it about it, many reviews. हम इतना अपने आप को, तो डू यू थिंक दैट राइट्स के कहने से राइट्स हमें मिल गए? आपको मिल गए होंगे आपके घर में, मुझे मिल गए हैं मेरे घर में. इज इट फॉर एवरीवन? नो. व्हेन पीपल लाइक अस आर डिनाइड ऑफ दीज राइट्स, देन वी कैन नॉट से वी आर इक्वल्स. मतलब अगर आपके जैसा कोई और किसी और के साथ भी हो रहा है ना, तो दैट मीन्स यू आर नॉट इक्वल. समवेयर यू आर ऑल्सो देयर. Now come to how we acquire the citizenship. It's a it's a actually legal procedure, but it is formed by the political governments. The nation is different from a country. A country is defined by territory, government with a population in it, and nation matlab culture and history. यानी कि it gives the identity to an individual on the basis of which they are recognized as different from countries. For example, Indian, मतलब हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारा नेशन है. एंड कंट्री क्या है? दैट इज द टेरिटरी. 28 स्टेट्स, 8 हमारा मतलब की यूनियन टेरिटरी, दैट्स अ कंट्री. The state then provides rights to these individuals so that they can enjoy. Also, different states provide different rights. हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में सिटीजनशिप इज देयर. नाउ लेट अस कम टू द एक्वायरिंग. ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है विच यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम. it has come in fact. See बच्चा, if you are an Indian, कैसे हो इंडियन? क्यों हो इंडियन? आप क्यों हो आप इंडियन? बताओ. अनंत इंडियन क्यों है? आद्या इंडियन क्यों है? रमा इंडियन क्यों है? Why we are Indian? Why we are calling हम Indian है, Indian है, Indian है? I am not saying I'm Indian. This is because there are some criteria which gives me this right to say that I am an Indian. Even though I may be living in Japan, but I say I'm an Indian. I'm staying in China, but I'm an Indian. So what is that? And if tomorrow I want I need to take the citizenship of any other country, is it possible? Does Indian constitution provide double citizenship?
तो पहला है कि इन इंडिया वी डोंट हैव डबल सिटीजनशिप. डबल सिटीजनशिप इज गिवन इन सर्टेन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस, जहां पर आपके जो स्टेट्स हैं दे हैव कम टुगेदर टू फॉर्म वन कंट्री. तो द पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ अ स्टेट एंड ऑल्सो टू द मेन कंट्री. तो वो तो हमारे यहाँ नहीं है. लेकिन जब हम कहते हैं सिटीजनशिप को हमें लेना है, tomorrow you want to go somewhere, you want to achieve, you want to acquire, you are, so then what are the criteria on the basis where you will get this? The first is birth. yani ki if you are born in a country, you automatically become a citizen of this country. Descent means if his or her parents are born in that country, he or she automatically becomes a citizen of that country. For example, let us take, I'll not be taking any political example to stay away from any kind of what you call as कोई भी वो नहीं चाहती हूँ मैं अपने ऊपर. But if you know Katrina Kaif, why Katrina Kaif is considered as an Indian? This is because उसके जो फादर थे या मदर थे देवर कश्मीरीज. तो इन दिस मैनर दे एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री. यानी कि आप अमेरिका में बॉर्न हुए थे लेकिन फिर भी आप इंडियन हो बिकॉज योर पेरेंट्स वर बॉर्न इन दिस कंट्री. आपके पापा मम्मी यहाँ पे पैदा हुए. देन इज in some of the countries, for example, in US, it's very difficult to get a citizenship, as I already told you, and in Australia also. Well, some of the countries have their very difficult what you call as procedure. तो यहाँ पर क्या होता है कि देर आर टू वेज. एक होता है आप वीजा के थ्रू जाते हो विच इज कॉल्ड एज स्पाउस वीजा, H-1B वीजा, वर्क वीजा करके. तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड ग्रीन कार्ड होल्डर ऐसे करके. मतलब व्हाट इज दैट ग्रीन कार्ड होल्डर? दैट इज अ मिनिमम पीरियड you are living in that area, then you are provided with certain rights, and by chance आप वहां जाते हो and you marry the person from that particular area जो वहां का सिटीजन है, you get the citizenship. ऐसा इंडियंस बड़े सारे करते थे पहले. मुझे अभी का नहीं पता बिकॉज अभी तो द वीजा पीपल दे टेल दैट इट्स नॉट दैट मच. मतलब अब नहीं है इतना. पहले क्या करते थे, इंडिया में आएंगे, शादी करेंगे या लड़की छोड़ देंगे, दे विल गो देयर एंड बाद में पता रहेगा दे आर ऑलरेडी मैरिड, देन दे वुड गेट डाइवर्स फ्रॉम दैट गर्ल बट दे बिकम द सिटीजन. certain times people use such, crooked method also. तीसरा होता है इन सच कंट्रीज, अगर आप इंडियन हो, आपकी शादी भी इंडियन से ही हुई है, आप यूएस चले गए, वहां जाने के बाद आपके बच्चा जो है वहां पैदा हुआ, you become the citizen of that country. As I was telling about you about my cousins, this happened with my cousin. When he went over there, he was there for his studies and then he settled over there. And then both of his daughters were born there. He acquired the citizenship. So there are such acquired जिसको हम बोलते हैं वो भी होता है. हमारे यहाँ पर क्या है, इन इंडिया इट इज दैट कि इन मतलब हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स जहाँ पे हुए हैं तो वी बिकम द सिटीजन. एंड स्पेसिफिकली इट नेचुरली रिलेट्स टू फादर. मदर पे काफी जो है मतलब कि वो चलते रहते हैं. Registration. Now, this is the one which I said, which we have to go through many procedures. You are applying for the citizenship of other country. तो आपसे पूछा जाता है. And that does, अब देखो citizenship के अंदर जो है एक चीज होती है, वो ये होता है कि you want to, यहाँ की जो citizenship है आप उसको छोड़ देना चाहते हो and वहां आना चाहते हो, या यहाँ का रख कर वहां पे लेना चाहते हो. You must have heard about the very controversial citizenship issue of Akshay Kumar. Because जब citizenship हो तो passport आपकी वहां की बनती है. So you may apply for citizenship in another country and that depends for which purpose you are doing. Or one of the मतलब कि no two person had applied to citizenship
in Australia, they got it. एक एक करके सबको मिल गया. Now they are all settled over there, but they are still Indian, मतलब कि citizenship के Indian passport के अंडर ही आते हैं. But थोड़ा सा वही होता है कि controversies काफी आ जाती हैं while they are traveling. So you may register yourself. Naturalization, as I said, जो भी मैंने green card का आपको एक वो बताया था. Then if you are living for a minimum period 10 years, मतलब जो आपकी क्राइटेरिया बन रखे हैं, एंड देन मान लो कि वो जो कंट्री थी, फॉर एग्जांपल गोवा वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया स्टिल, सॉरी, टिल 1952, बट बाद में जब पोर्चुगीज ने उसको जो है व्हेन दे हैड हैंडेड ओवर एंड इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहां के जो लोग थे दे आल्सो बिकेम द इंडियन के बन गए वो लोग. Goa was not part of India. Andaman Nicobar was not part of India. But they became part of India when the particular territory was acquired by us. This is how the inclusion has been there. So these are the different ways through which citizenship can be acquired. But कई बार क्या होता है, people मतलब कि जो लोग होते हैं ना, they even go for a wrong way, which is actually, अगर पकड़े गए. अभी कल ही मैं पढ़ रही थी, यूके के प्रेसिडेंट जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है, सुनाक, ही हैज टाइटन द सिटीजनशिप रूल्स. So now the countries are coming up with difficult procedures also. In between there was काफी अच्छा था. ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अभी नीचे आपका एक concept है which is called as global. So now there is a difference between universal and global. Universal का मतलब हो जाता है यूनिवर्सल, इक्वल फॉर ऑल. एंड ग्लोबल का मतलब हो जाता है आप जब ग्लोब में रह रहे हो. नाउ वी आर लिविंग हियर बट माय कंपनी इज यूएस बेस्ड, यानी कि मैं कहीं ना कहीं तो यूएस में ही काम कर रही हूँ, मैं इंडिया में काम कर रही हूँ, लेकिन काम तो मैं वहीं के लिए कर रही हूँ. जो दोज पीपल हु आर वर्किंग विथ मैकडोनाल्ड्स, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपोर्टिंग टू यूएस. तो ऐसे में कई लोगों का मानना है कि देयर शुड बी व्हाट वी कॉल एज ग्लोबल सिटीजनशिप. कई लोगों का मानना है कि देयर शुड बी ग्लोबल सिटीजनशिप. और ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए कई लोग कहते हैं कि इट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज सिटीजनशिप का जो क्राइटेरिया है वो ये होता है वेयर पीपल आर शेयरिंग देयर कल्चर, बिलीफ, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और समथिंग. और अगर हम ग्लोबल जाते हैं तो दैट वुड नॉट बी देयर, बिकॉज हमारा जो कल्चर है या हमारा जो मतलब की ट्रेडिशन है, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज. So there is a controversy which is going about global citizenship. So now let us come to what is universal. मतलब universal का मतलब होता है where it is same. The concept of universal citizenship creates a new type of political relations between migrants and host countries. जैसे अभी मैंने आपको बताया रोहिंग्या, आपके ड्यूरिंग द 1972 द माइग्रेंट हु हैड कम ओवर, दे हैड, जो माइग्रेट होकर आए, जो रेफ्यूजीज थे वो अलग और जो माइग्रेंट्स थे वो अलग. The word refugee is used when you are using illegal way and migrants is legal. Because of social and economic inequalities, people are unable to fully enjoy their national citizenship. As a result of famine, devastation, or war, many people become stateless on a global scale. It has happened across the world many times. They don't have citizenship in a country that can protect and defend. They rely on other countries to protect them and provide them with essentials of life. Although many states support the idea of universal and inclusive citizen, each has their own criteria. That is what I said. Refugees are when you are illegally crossing the border. Migrants are when you are given the permission. So during the war, we had many migrants, we had many refugees.
रिफ्यूज होता है जो शेल्टर लेने आया है, माइग्रेंट्स हैं जिनको हमने शेल्टर दिया था, लाइक दलाई लामा। दलाई लामा को आपका 12th में एक चैप्टर में है, दिस इज देयर। दलाई लामा जो है, देयर वाज अ कंट्रोवर्सी, देयर वाज इन फैक्ट अ कॉन्फ्लिक्ट इन चाइना, क्योंकि चाइना जो है तिब्बत को अपना टेरिटरी मानती है, एंड दलाई लामा एंड हिज फॉलोवर्स जो है दे मतलब कि प्रोटेस्टेड। उस वक्त में इंडिया ने 1960s में इंडिया गेव शेल्टर टू दलाई लामा, एंड धर्मशिला के अंदर, धर्मशाला जो है वहां पर दे हैव मेड देयर, उन्होंने अपना बना रखा है, एंड इसके ऊपर चाइना हमसे काफी नाराज है। दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन इन 12th स्टैंडर्ड। तो माइग्रेंट्स होते हैं हम उनको रिकॉग्नाइज करके अपनी कंट्री में अलाउ करते हैं। Many countries face a difficult humanitarian and political problem when deciding how many people they accept as citizens. Many countries have a refugee policy that welcomes people fleeing persecution or war. They may, however, be unwilling to accept an unimaginable number of putting the country in danger. यही हमारे यहाँ controversy चल रही है. And this controversy has been seen as violence in some of the states, क्योंकि जिन स्टेट्स में वो लोग आते हैं वहां के लोग उस चीज को नहीं पसंद करते हैं, एंड दैट्स ऑब्वियस। भाई मेरे घर के अंदर आकर कोई मेहमान 2 दिन रहता ठीक है, लेकिन अगर वो परमानेंट एक रूम को शेयर करेगा तो मैं तो बोलूंगी। दिस इज द प्रॉब्लम, कितनों को रखना चाहिए कितनों को नहीं रखना चाहिए। As it did in 1959 with Dalai Lama and his followers, इंडिया टेक्स प्राइड इन प्रोवाइडिंग रिफ्यूज टू परसिक्यूटेड पीपल्स। इंडिया ने जो है उस वक्त में दिया था, एंड दिस वाज अ लॉन्ग बैटल। इनफैक्ट दिस जो है रिजल्टेड इन डेंटिंग ऑफ इंडियन एंड मतलब की चाइनीज मतलब की रिलेशंस आल्सो। ये तो एक मतलब की काफी हमारा था। इनफैक्ट उन्होंने तो, हमारा एक प्रिंसिपल था और उस प्रिंसिपल को उनके अकॉर्डिंग हमने उस प्रिंसिपल को जो है वी हैड पंचशील, वी हैड ब्रोकन। बट इंडिया बिलीव दैट गिविंग shelter to someone as a migrant is humanity. People from neighboring countries have crossed off the state borders into India, and the process is still going on. Many of these people have spent years or generations as stateless people in camps or illegal migrants. However, in each country has a limit on how many refugees it can accept, and it must first look after its own citizenship. तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दिस पर्टिकुलर जो ये मतलब कि माइग्रेंट्स है, ये आपका मतलब कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक वाज इवन टेकन इन द यूएन असेंबली। इसको यूएन असेंबली में भी लिया गया था। एंड दिस अगेन कम्स कि भाई कितने लोगों को लेना चाहिए, कितने लोगों को शेल्टर हमें देना चाहिए, बिकॉज एक कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाता है। पॉपुलेशन के बढ़ने का साथ में देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैव टू, द अदर पर्सन मे बिकम अ थ्रेट टू आवर ओन कंट्री। sympathy should not become something else. So there have been many debates which are taking place, how many to be taken, how many to be given, how the citizenship should be given to these people जो हमारे यहाँ पर refugee या migrants बन के आ जाते हैं, what should be the criteria. But जो basic criteria है वो ये है कि when we talk about citizenship, it is something which recognizes the people as a part of that area, that territory, that state, that country. And T.H. Marshall says, civil rights, which gives us a life, liberty, and property, political, right to vote, right to contest, social, right to education, employment, equality. यानी सिटीजनशिप हम तब कहते हैं जब हम लोग उस एरिया के मेंबर बन जाते हैं, माने जाते हैं, that may be acquired because we are born in that country, that may be because our parents were born in that country, or that may be because we have been living in that country for a certain period of time, or we have applied
या फिर हमारी जो टेरिटरी थी वो उस कंट्री का हिस्सा बन गई है. So this is all about the chapter citizenship. In the NCERT, you have quite a long explained मतलब कि concept of the same, which you will be starting in the next class.